got from इसमें आप आई हो क्या? इसमें he is not the IO but he is the SHO in the Thana right presently man. Okay. Now IO now has been Is the same person involved in this case? मतलब तो सुनिए, cases आप सुनिए पहले। आप ये पुलिस वाले कर, इसका केस ये है कि नाम इसका भी वही है जी सर। और इसके फादर का नाम भी वही है जो एक दूसरा है। जी सर। ये कहता है मेरे खिलाफ कोई केस नहीं हुआ, कभी कोई संबंध नहीं, कुछ वो नहीं है, तो अननेसेसरली इसको इसके बेस पे एक्शन लिया गया कि इसके खिलाफ केस है। तो आप इंश्योर करो यही है, आपके सामने खड़ा है। श्रीमान जो है सर, इनकी आयु है सर हेड कांस्टेबल 349 सर जो है, इन्हें सर क्राइम रजिस्टर में सर मेंशन किया इस प्रकार का कि सर इन्होंने सर इनकी मेमोरेंडम कथन लिखित किए गए, इनकी जब्ती हुई है सर, अरेस्टिंग हुई है सर। नहीं, अरेस्ट हुई है। जीआर पे सर मतलब तो अरेस्ट हुई है जी सर। तो अरेस्ट में तो फिर वो सिग्नेचर अंगूठे वो सब लगते हैं। those papers are not there. Those papers are not there. It is the disposal record which tells about तो it. डायरी कोर्ट में जमा है वो जमा थी सर, उसके बाद वो ट्रेस नहीं हुआ, उसके बाद वो तो ट्रायल कोर्ट का my lord पर ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं। जी जी The record is not available. The government advocate mentioned, Record? this is me. मैम ये डेलिबरेट लॉर्डशिप ये डेलिबरेटली किया गया है माय लॉर्ड। एनेक्सर P2 देख ले माय लॉर्ड। आई वाज May kindly see these entries my lord. May kindly see these entries. These are the things which are इस available. एंट्री से कुछ एस्टेब्लिश होता है कि Establish ये हो रहा है कि इनको अरेस्ट किया था एक केस में। माय लॉर्ड गांव का नाम नहीं, पूरा नहीं है, पिपरिया बस लिखा है, जबकि मेरे गांव का नाम है पिपरिया दोन और देयर आर 3 पिपरिया दोन। पिपरिया अलग है। Yes, my lord. There are 3 Piparia in the Pavai Tehsil. And my lord, kindly have a look, Annexure P2. I was studying in Gramodaya Vishwavidyalaya, that was 164 kilometers away from the place of incident. How can I reach there? And that the date of incident is the working day, not holiday. And more than 80% attendance is required there. There is very strict rule there. That is the A++ university. And I cannot go outside of the gate without taking permission of the head of department. And he has given me certification that I was available there, and I was studying there from 2007 to 2008. That between that time I was the university, my lord. And this is my admit card. That is also sold that admit card 9/5/2008. I was studying there, my lord. And my lord, one more thing I want to submit. Kindly peruse the judgment dated क्रिमिनल केस का जो जजमेंट है 422/8। इसमें जो मोटरसाइकिल माय लॉर्ड लिखी है वो मोटरसाइकिल है ही नहीं उस नंबर की। मैंने उसको फाइंड आउट कराया, नेट पे भी सर्च करवाया, आरटीओ पन्ना में भी मैंने दिखवाया, कहीं पर भी इस नंबर की मोटरसाइकिल है ही नहीं। कहां से बना दी गई? लर्नेड जेएमएफसी हैज आल्सो मेंशन्ड इन द पैरा 12 बिना रजिस्ट्रेशन नंबर, बिना चेसिस नंबर एवं बिना इंजन नंबर की बरामद मोटरसाइकिल जिसकी कोई शनाख्ती जहन से न करवाया जाना भी साथियों ने स्वीकार किया है। फिर किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह मोटरसाइकिल जहन की है? इस नंबर की मोटरसाइकिल ही नहीं माय लॉर्ड, फर्जी केस बनाया गया टोटल। एंड आई एम सफरिंग माय लॉर्ड, आई बिलोंग टू SC कैटेगरी and being despite of having a lot of crisis, I have studied and I was stood first in every class. In my school time, in my college time, every time I was also appointed CR of my college, seeing my academic labor, hard work. And nothing is adverse in my life anywhere. कोई भी मेरे बारे में एक गलत कमेंट नहीं बता सकता माय लॉर्ड, और मैं सफर कर रहा हूं इसकी वजह से। And my lord, Exhibit P14 में my lord, principal of school has issued the character certificate to me. He had mentioned that I bear a good moral character. आपके किस एड्रेस पे एस्टेब्लिश होता है यू आर फ्रॉम पिपरिया गांव? Yes, my lord. Which document establish Yes, my lord. that you belong to not Piparia? My Aadhaar card, my caste certificate. Kindly have a look, my lord. Annexure P8. सब में पिपरिया गांव है। Yes, my lord. Kindly. और इसके एड्रेस पे जो जिसके खिलाफ केस हुआ वो पिपरिया है। वो पिपरिया है, my lord. And even my lord, अगर इस जजमेंट को पैरा नंबर 3 में देखेंगे जो 422/8 है,
इसमें जो को एक्यूज है उसने बोला है कि उन्हें झूठा फंसाया गया, जबकि आरोपी इंद्र कुमार ये को एक्यूज है। पप्पू उर्फ मुकेश के घर में गाड़ी रखकर गए थे, पड़ोस के पप्पू उर्फ मुकेश, उसका गांव माय लॉर्ड मेरे गांव से 60 किलोमीटर दूर है, तो उसका पड़ोस मैं थोड़ी हुआ माय लॉर्ड। there is another Mukesh and I have asked to सरपंच of that village, there are two Mukesh, इंद्र कुमार के गांव में 2 मुकेश है, तो पड़ोसी वो हुए, मैं कहां 60 किलोमीटर दूर माय लॉर्ड, कहां से मैं उसका पड़ोसी हो गया? देयर आर मेनी विलेजेस बिटवीन देम। चलो, will give you order reserved for the day. Miles. My lord, may I make one submission? my lord? Yes, please. I have not made any submission, my lord. Yes. Oh. My lord, may I kindly see annexure R24 with my return. my lord. R2. My lord, the case, my lord, which is stated by the petitioner, his writ petition, is this, my lord, that he has been debarred, my lord, from the selection, my lord, on the basis that he failed to declare that there was a criminal case against him, even though he was acquitted. my lord. Right. He did not mention. To that, my lord, may I kindly see page 34 of my slide, my lord. And I will just read the administrative committee's, my lord, proceedings, my lord. I may be permitted to read that. As per the character verification report submitted by the Superintendent of Police Panna in crime number 24 of 2008 under section 379 of IPC and crime number 38 of 2008 under section 379 of Indian Penal Code were registered at police station Gannor, district Panna against him, and challan number 29 of 2008 dated 24/4/2008 and 30 of 2008 dated 24/4/2008 were presented in the court. In both the criminal cases, he has been acquitted. The committee considered the matter of the candidate Mukesh Kumar Chaudhary by submitting the online application form for main examination, attestation form, and personal biodata form. He did not disclose the fact of registration of crime against him, whereas it was mandatory for him to disclose his criminal entity. No, that is true, but ये क्या मेरे खिलाफ कैसी नहीं है? He from Piparia गांव. Yes, sir. The address of the accused is Piparia. Yes, sir. Name and father name, yes, match. That is true. His father name is same Even. as the other person. He said never ever been tried, and whereas in that case the other person was arrested. Arrested in that. So not even a single document. Can't be said, my lord. Even though, Now- my lord, even though the Honorable Supreme Court in the 2024 Ravindra versus State of UP has stated that was not my case. Even that the Honorable Supreme Court has stated that held that mere registration of FIR or mere having criminal case, that is not fatal to the public employment. Recently, Honorable Supreme Court has laid down in the state of